Welcome to all in study classes. Today we are going to start our Python series. So in VS Code we are going to start our Python tutorial. So firstly we are going to discuss about the Python. Here we are creating a Python file named as the first.py where py is the extension of py. So let's start with the Python, and here we are going to just giving you the overview of the Python, that what's the Python is and what are the various application areas where Python can be used. So welcome to all of you firstly. So today we are going to start our Python series 1. So welcome everyone. Today this is our first Python lecture. सो हम क्या करेंगे साइड बाय साइड हम कोड भी करते जाएंगे एंड देन मतलब आपको साथ में सारा पाइथन का जो भी बेसिक कंसेप्ट्स होंगे वो भी सारे समझा दिए जाएंगे एंड साथ ही साथ उसके साथ हम कोडिंग भी साथ में करेंगे. ठीक है, तो हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं सो दिस इज़ द VS कोड. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ पाइथन. ठीक है, सो पाइथन होती क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. So Python is a popular programming language. So let's write it on the VS Code. Python is a popular programming language. So there are the various applications area where Python can be used. So here we are writing that it can be used in web development, machine learning, and along with all cutting edge technology and software industry. So basically जो पाइथन है वो वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड ऑल द कटिंग एज इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है. सो पाइथन लैंग्वेज, अब हम इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो पाइथन यूज़ करती हैं. बट व्हाट आर द वेरियस कंपनीज that use Python language. So basically Python language is being used by all companies. हर एक कंपनी में बेसिकली पाइथन यूज़ होती ही होती है. लाइक द नेम ऑफ द कंपनीज आर गूगल, Amazon, Uber, Facebook and many more. ठीक है, so there are various companies that use Python language nowadays. Okay, so here we are going to write the first Python program. That most of the cases the first Python program that includes the just simple print a statement. So this is the syntax of printing something. So we have for the printing something we have to write the print function and parentheses, and that the thing that we have to print is enclosed in the parentheses. So this is the output of the function. This is the hello friend. Okay, so most of the cases हम hello फ्रेंड लिखना है या हेलो वर्ड लिखना है, हेलो वर्ड को प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रिंट फंक्शन एंड दिस parenthesis enclosed within this. So this is the output of the print function.